Have you ever wondered why the value of a currency fluctuates? Why rupee is continuously falling against dollar? And does it really matters? Let's find out the answer to these questions in this video. Let's first learn how the value of a currency alters. So the value of a currency changes when the demand of it increases or decreases in international market. लेट्स सपोज इंडिया एंड अमेरिका. सो अगर इंडिया अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करता है तो हमारे पास वहाँ की करेंसी होनी चाहिए, मतलब डॉलर होना चाहिए, जिससे इंडिया में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और इससे डॉलर की वैल्यू रुपीस के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी. इन शॉर्ट, इफ आर इंपोर्ट बिल इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट बिल देन द वैल्यू ऑफ आर करेंसी इज लोअर देन दैट ऑफ अदर कंट्री. इसके अलावा देयर आर अदर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ अ करेंसी. And they are inflation, employment, equity rate, growth rate, etc. Do you know that in 1947, at the time of independence, $1 was equals to 1 rupee, and today in 2020, it's equal to 75 rupees. I wonder what happened in the past 72 years that led to such a downfall in the value of rupee. तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है मनी क्रंच इन इंडिया. एज वी ऑल नो दैट इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इंडिया की आर्थिक स्थिति काफ़ी ढीली थी, जिसके कारण हमें फॉरेन कंट्रीज से बहुत सारा लोन लेना पड़ा, विच इज़ वाई वेरी सून $1 बिकेम इक्वल टू 4.79 रुपी. फिर 1962 में इंडिया चाइना वॉर, देन इन 1971 इंडो पाक वॉर. इनके कारण भारत को विदेशों से डिफेंस वेपन्स एंड एयरक्राफ्ट लार्ज नंबर्स में खरीदना पड़ा, which further increased $1 to 8.39 rupees. Then the increase in prices of crude oil, flood, famine, political instability, economic crisis of 1991 and several other reasons added up to this unfortunate truth, making Indian rupee the worst performing currency amongst the other currencies in BRICS. And in current scenario if you see, तो crude oil के prices कितनी तेजी से fluctuate कर रहे हैं, and we are the third largest crude oil importer country because India produces just 20% of her requirement and rest we import from other countries like Iraq, Iran, Saudi Arabia, etc. And this makes crude oil the biggest contributor in the import bill of India. Then the US-China trade war and this COVID-19 pandemic are further acting as fuel to the fire. In addition to all this, there is one more factor which decreases the value, that is devaluation, and it's intentionally done by the government of a country which follows fixed exchange rate system. डिवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम करती है बट डोमेस्टिक मार्केट में वैल्यू सेम रहती है. तो अब डिवैल्यूएशन करती क्यों है? तो ये इसलिए कोई गवर्नमेंट करती है ताकि उस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज दैट अर्लियर द प्राइस ऑफ अ गुड फ्रॉम इंडिया चार्ज्ड $1,000 in America, but now after devaluation the same product costs $900. Hence, people would prefer purchasing Indian stuffs more, which in turn will enhance our export. Also, it solves the problem of balance of payment. In India, since 1947, 3 बार currency devaluate किया जा चुका है, and China does it most often to enhance its export. However, people often get it wrong when they measure the economic strength of a country by the value of its currency, because they are not related to each other. For example, India in 2020 is far better than that in 1947, though there is a fall in rupee value. Hence, we need not worry about the value of currency, rather worry about the frequent fluctuation in the currency market. That's it for this video. If you found it informative, then please consider subscribing to the channel and hitting that thumbs up button.